ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां दूतसंहितायाम् सप्तदशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता सर्वदेवैक्ष कृता शम्भुर्नृति परा शिवाच सा वरं प्राप्ता शृणु हादरतो मुने अथो सती पुनः शुक्लपक्षे अष्टमया मुपोषिता आक्षिणे मासि सर्वेशं पूजयामास भक्तिता इति नन्दाव्रते पूर्णे नवमया दिनभागता तस्यास्तु ध्यानमग्नाया प्रत्यक्षं भगवद्वर सर्वाङ्गसुन्दरो गौरा पञ्चवक्त्रस्त्रिलोचना चन्द्रबालप्रसन्नात्मा शितिकण्ठक्षतुर्भुज त्रिशूलब्रह्माकबराभयदृक् भस्मभास्वरा स्वर्धन्या विलस्यच्छीर्षा सकलाङ्गमनोहरा महालावण्यधामा च कोटिचन्द्रसमानना कोटिस्वरस्माकान्ति सर्वथा स्त्रीप्रियाकृति प्रत्यक्षतो हरं वीक्ष सती सदृक् विधं प्रभुं ववन्दे चरणौ तस्य सुलजावन्तानना अथ प्राह महादेवा सतीं तद्व्रतधारिणीं तामीच्छन्नपि भार्यार्थं तपश्चर्या फलप्रदा महादेव उवाच दक्षनन्दिनी प्रीतोऽस्मि व्रतेनानेन सुव्रते वरं वर्य सन्दास्य यत्त्वाभिमतं भवेत् ब्रह्मवाच जानन् इह तद्वामं महादेवो जगत्पति जगोवरं वृणीक्ष्वेति तदाख्यश्रवणेच्छया सापि तृप्तावशा युक्ता वक्तुं नो हृदि यथेस्ततं शशाक सात्वभीष्टं यत् लज्जाच्छादितं पुनः प्रेममग्ना भवत्साति श्रुत्वा शिववचा प्रियं तज्ज्ञात्वा सुप्रसन्नो भूशङ्करो भगवत्सदा वरं ब्रूहि प्राहेति स पुनर्दुतं सती भक्तिवशा शम्भुरन्तर्यामी सतां गति अथ त्रपां सवां सन्ध्याय यदा प्राह हरं सती यथेष्टं देहि वरद वरमित्यनिवारकं तदा वाक्यस्यावसान्मन्वेक्ष वृषधवजा भवत्वं मम भार्येति प्राह तां भगवत्सला एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य साभीष्टफलभावनं तूष्णीतस्थो प्रमुदिता वरं प्राप्य मनोगतं सकामस्य हरस्याग्रे स्थिता सा चारुहासिनी अक्रोन्निजभवाक्षा भावाक्षं भावान् कामविवर्धनान् ततो भावान् समादाय शृङ्गाराख्यो रसस्तदा तयोक्षते विवेशाशु कलाहावा यथोदितं तत्प्रवेशातु देवर्षे लोकलीलानुसारिणी काव्यविख्यातयोरासि चित्रा चन्द्रमयस्योरथा रजे सती हरं प्राप्य सिनग्धभिन्नाञ्जनप्रभा चन्द्राभ्यासे भ्रलेखेव स्फटिकोज्ज्वलवर्षमना अथ सा तमुवाचेदं हरं दाक्षायणी मुहुः सुप्रसन्ना करो बद्ध्वा अनत्का भक्तवत्सलं सत्युवाच देवदेव महादेव विवाहविधिना प्रभो पितुर्मे गोचरीकृत्य मा गृहाण जगत्पते ब्रह्मवाच एवं सती वच्छ्रुत्वा महेशो भक्तवत्सला तथा स्थितवती वचा प्राह निरीक्ष्य प्रेमतक्षतां दाक्षायण्यपि त्वं तं नत्वा शम्भुविज्ञाप्य भक्तिता प्राप्ताज्ञामातुरभ्या शमगान्मोहमुदान्विता हरोऽपि हिंवत्प्रसथं प्रविश्य च निजाश्रमं दाक्षायणी
वियोग्यादे कृच्छं ध्यानपरो भवत् समाधाय मना शम्भुर्लौकिकीकृतं गतिमाशता चिन्तयामास देवर्षे मनसा मावृष्ट्वजा तथा सच्चिन्त्यमानो हम महेशेन त्रिशूलिना पुरस्तात् प्रभाषितूर्न हरसिद्धि प्रचोदिता यत्रासो हिमवत्प्रस्थे तदीयोगी हरास्थिता सरस्वती युक्तस्तात् तत्रैव समुपस्थितः सरस्वतीयुतं मा च देवेशे वीक्ष्य स प्रभु उत्सुको प्रेमवत्सच्च सत्या शम्भुवाच अहं ब्रह्मान् सर्वात्परा परिग्रहः कृतोच्च यत् तदा स वत्मिव स्वार्थे प्रतिभाति ममाधुना अहमाराधिता सत्या दाक्षायणयात् भक्तिता तस्य वरो मया दत्तो नन्दाव्रतप्रभावता भर्ता भवेति च तया मतो ब्राह्मणवरो वृता मम भार्या भवेत्युक्तं मया तुष्टेन स्वर्था सर्वथा अथावत् तदा मासा सती दाक्षिणी तीवती पितुर्मे गोचरीकृत्य मा गृहान् जगत्पते तदप्य अङ्गीकृतं ब्रह्मान्मया तदक्ति तुष्टिता सा गता भवनं मातुर्हमत्रागतो विधे तस्मात् त्वं गच्छ भवनं दक्षस्य मम शासनात् तां दक्षोऽपि यथा कन्यां दध्यान्मेरं तथा वदा सती वियोगभगं स्याद्धता मे त्वं तथा कुरु समाक्षास्य तं दक्षं सर्वविद्याविशारदा ब्रह्मवाच इत्युदीर्य महादेव सकाशे मे प्रजापते सरस्वतीं त्रिलोक्याशु वियोगशगो भवत्तिन्हामपि चाज्ञप्त कृत्यो मुदान्विता प्रोवाचं चेति जगतां नाथं तं भक्तवत्सलं यथाथ भगवन्शम्भो तदीचार्य सुनिश्चितं मुख्यस्वार्थो हि देवानां ममापि वृषभध्वज दक्षसत्तुभ्यं सुतां स्वाच स्वयमेव प्रदायसति अहं चापि वदिष्यामि त्वदाख्यं ततस्मक्षता इतुदीर्य महादेवमहं सर्वेश्वरं प्रभुम् अगमं दक्षनिल्यं स्यन्दने नान्तिवेगिना नारदुवाच विधे प्राज्ञ महाभाग वदनो वदान्त्वर सत्यगृहात् गताय स दक्षं किं करोत्तता भ्रमुवाच तपस्तप्त्वा वरं प्राप्य मनोभिलषितं सती गृहं गत्वा पितुर्मातुः प्रणामं करो तदा मात्रे पित्रेथ तत्सर्वं समाचख्यो महेश्वरात् वरप्राप्ति स्वसख्या वै सत्यास्तुष्टात् तु भक्तिता माता पिता च वृत्तान्त सर्वं श्रुत्वा सखीमुखात् आनन्दं परमं लेभे चक्रे च परमोत्सवं द्रव्यं ददो द्विजातिभ्यो यथाभीष्ट मुदारधी अन्येभ्यः क्षान्ददीनेभ्यो वा वीरिणी च महामना वीरिणी तां समालिङ्गच्छ सत्सुतां प्रतिवर्धिनीं मूर्धन्योरपाघ्राय मुदिता प्रशंसन्सु मुहुर्मुहुः अथ दक्ष यत्काले व्यतीते धर्मवित्तमा चिन्तयामास देयेयं स्वसुता शम्भवे कथम् आगतोऽपि महादेव प्रसन्ना स जगामः पुनरेव कथं सोऽपि सुतार्थेऽत्रागमिष्यति प्रसत्थाप्योऽथ मया कच्छिन् भो निर्कटं मज्ञसा नैतिध्योग्यं न गृहाद्य दैव्यं विफलार्दना अथवा पूजयिष्यामि तमेव विश्वध्वजं मदीतन्यायुक्तस्वर्यमेव यथा भवेत् तयैव पूजिता सोऽपि वाञ्छत्तार्यप्रियं तथा नता शम्भुर्भुवत्तु मुदते
एवं दत्वरेण तथा इति चिन्तयत्तस्य दक्षस्य पुरतोऽन्वहम् उपस्थितोऽहं सहसा सरस्वत्यन्वितस्तदा मा दृष्ट्वा पितरम् दक्षाप्रणमया वनता स्थिता आसनं च ददोमहं स्वभावे यथोचितं ततो मा सर्वलोकेशं तत्रागमन् कारणं दक्ष प्रपच्छ सक्षिप्तं चिन्ताविष्टोति हर्षता दक्षुवाच त्वात्राग्ने हेतुका प्रवेशे सृष्टिकृता ममोपरि सुप्रासादं कृत्वा चक्ष्व जगद्गुरु पुत्रस्नेहात् कार्यवशादत्वा लोककारका ममाक्षं समायातो रुष्टस्य तव दर्शनात् ब्रह्मवाच इति पृष्ट स्वपुत्रेण दक्षेण मुनिसतं विहसन् ब्रुवन् वाक्यं मोदयस्तं प्रजापतिं शृणु दक्ष यदर्थं त्वत्समीपमागता त्वत्तोकस्य हितं मेऽपि भक्तोऽपि तदीप्तसं तव पुत्री समाराध्य महादेवं जगत्पतिं यो वरं प्रार्थितस्तस्य संयोऽयमुपागता शम्भुना तव पुत्र्यर्थ त्वस्तकाशमहं ध्रुवं प्रस्थापितोऽस्मि यत्कृत्यं श्रेयस्तत्त्वधारय वरं दत्त्वा गतो रुद्रस्तावत् प्रभृति शङ्करा त्वत्सुताया वियोगेन न शर्म लभेतं यत्सा अलब्धच्छिद्रमदनो जिगाय गिरिशं नयमा सर्वे पुष्पमये बाणेयर्तनं कृत्वापि भूरिशा स काम्बानाविदोऽपि परित्यज्य यज्ञातं चिन्तनं सतिं विचिन्तयनास्ते व्याकुला प्राकृतो यथा विस्मृत्य प्रसुताङ्गानि गणाग्ने ग्रे विप्रो योगता कसत्येवमभितो भाषते न कृतावपि मया यदाच्छितं पूर्वं तव्या च मदनेन च मरीचयाधेर्मुनिवरेस्तस्तिदम्धुना स्तुता पुत्र्याराधिता शम्भु सोऽपि तस्य विचिन्तनात् अनुशोध्य यतुं प्रेत्सुर्वर्ते हिंवद्वीरो यथा नानाविधिर्भावे सत्वा तेन व्रतेन च शम्भुराराधितस्तेन तथैवाराध्यते सति तस्मात् दक्षतन्यां शम्भवर्थ परिकल्पितां तस्मै देहाविलम्बेन कृता ते कृत्यता अहं तं मानयिष्यामि नारदेन त्वदालयं तस्मै त्वमेन संयच्छ तदर्थे परिकल्पितां श्रुत्वा मम वचस्येति स मे पुत्रोऽति हर्षिता एवमेवेति मा दक्ष उवाच परहर्षिता तथा सोऽहं मुने तत्रागमत्यन्तहर्षिता उत्सुको लोकनिरतो गिरिशो यत्र संस्थिता गतेनारदक्षोऽपि सदारतन्योऽपि अभवत्पूर्णकामस्तु पयूषे रिपूरिता इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सती खण्डे सतीवरलाभो नाम सप्तदशोऽध्यायः।